Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Stay home, stay safe. In previous video, we studied about algebraic expressions, factorization of algebraic expressions and expansion of algebraic terms. Okay, and for today, we are going to start our 7th chapter, variation. What is the meaning of variation? What is the meaning of variation? In previous standard, you have studied about ratio and proportion. Ratio and proportion is similar to variation. Variation is similar to proportion. Vice versa. You studied two types of proportion, direct proportion and inverse proportion. And for same, we are going to study two types of variations, direct variation and inverse variation. Before this, let's recall some part. Suppose, for example, price of 10 notebooks. Price of 10 notebooks. Cost of 10 notebooks is suppose 140 rupees. 140 rupees. Then find price of 4 notebooks or cost for 4 notebooks. Then how to decide that? You have to firstly find out cost of one notebook. Cost of one notebook. And for that you have to divide total cost by total numbers of notebooks. Okay, 140 upon 10, that is 14 rupees. That means 14 rupees is your value of one notebook. Therefore, cost for 4 notebooks is 4 into 14, that is 56 rupees. Understood? For 10 notebooks, you have to pay 140 rupees, and for 4, you have to pay 56 rupees. Similarly, see, cost for 7. Cost for 7. For 7 into 14. 14 sevens are 98. मीन्स यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे जैसे ये वैल्यूज यहाँ पे लेस हुई थी, तो यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट आंसर 56 था, यहाँ पे सडनली इंक्रीज हो गई वैल्यू. सपोज दिस इज वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज वैल्यू ऑफ y. वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y. यहाँ पे देखो ये 98 हो, मीन्स x and y increases or decreases simultaneously. जब हम एक वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो दूसरी वाली वैल्यू भी इंक्रीज होती है. जब हम एक वैल्यू डिक्रीज करते हैं तो दूसरी वाली भी डिक्रीज होती है. इट्स कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन. इट्स कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन. Understood? It's and for inverse variation, this is our direct variation, and this is inverse variation.
build one wall. You have to build one wall. For that, two persons taking 16 days. 16 days. 16 days. See here, this is suppose number of persons x and number of days y. Two persons takes 16 days. If we increase number of persons, suppose here 8 persons, then मीन्स यहाँ पे देखो 2 पर्सन 16 डेज में ये वॉल कंप्लीट करते हैं, तो हमें पहले 1 पर्सन के लिए वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे हम डिवीजन करते थे, यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, क्योंकि क्यों मल्टीप्लिकेशन करना है, दोनों मिलके दोनों बांट के काम कर रहे हैं ना। अगर एक ही करेगा तो डबल टाइम लगने वाला है, समझ में आ रहा है। तो हमें क्या करेंगे, इनवर्स वेरिएशन के लिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पर्सन्स इनटू डेज, persons into days, and person into days, that is 2 into 16 is 32, and now for 8 persons we have to find days. For 8 persons, again write down persons into days. काम तो कम नहीं होने वाला, होने वाला। मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसे बोलते हैं 32 वर्क मीन्स वर्क हमने मेजर किया है एक नंबर में, वो है 32। अब 8 पर्सन्स हम बढ़ाने वाले हैं, मीन्स x इंटू वाई करने वाले हैं, तभी भी ये जो है 32 ही वर्क रहने वाला है, वर्क सेम ही रहेगा। x persons 8 then y is 32, y equal to 32 upon 8 means y equal to 4, 8 4 are 32 means y persons means 8 persons जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 डेज में वर्क कंप्लीट करेंगे। सपोज सी हियर 6 पर्सन्स के लिए मैं काउंट करती हूँ इस साइड पे। फॉर 6 पर्सन्स x into y is same, 32 persons are 6. Okay, you have to find days means y equal to 32 upon 6, y equal to this 32 is not perfectly divisible by 6. Answer will in fraction form or in decimal form. 6 5s are 30, 2 remains 20, then 6 3s are 18, again 2 remainder, again 23 3. We seen about this recurring decimal and non-recurring like this means जब 6 persons फील्ड पे हो गए, काम पे हो गए एक वॉल बनाने के लिए, तब वो काम जो है वो काम कंप्लीट होने में 5 डेज कंप्लीट लगेंगे, और जो 6th डे जो है वो 0.33 मीन्स थर्ड पार्ट ऑफ 100 ना, 33 मीन्स थर्ड पार्ट ऑफ 100, तो 1/3 पार्ट में ही कंप्लीट हो जाएगा मीन्स 5 डेज से ज्यादा और 6 डेज से कम, ऐसे होगा। तो समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे हम
हमारी ये वैल्यू हो गई 5.33। देखो यहाँ पे ये इंक्रीज हो गया 2 से 8, 8 इज ग्रेटर देन 2 बट 4 इज लेस देन 15, मीन्स ये डिक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे फिर से ये नंबर डिक्रीज हुआ है, लेकिन इन दोनों में ये दिस वन इज ग्रेटर नंबर। इन शॉर्ट, फॉर inverse variation, when we increases value of x, y will decrease, and when we will decrease value of x, y will increase. Y will increase. Understood? You have to write down this basic part firstly. Okay? साइमल्टेनियसली हम दो एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों के टर्म्स भी सेम है और एग्जांपल्स भी सेम ही रहते हैं। हमें अब कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखना है, इनका नोटेशन कैसे लिखते हैं वो देखना है। ओके, ओके, अगेन डायरेक्ट वेरिएशन। आपको क्या करना है, पहले सिर्फ एक ही पेज के 2 पार्ट्स करके डायरेक्ट एंड इनवर्स ऐसे लिखना है, तो आपके लिए भी इजी होगा। सपोज डायरेक्ट वेरिएशन में हम क्या करते हैं, when x increases y also increases, when x decreases y also decreases. Okay, and in inverse variation when x increases y will decrease, and when x decrease y will increase. ओके, अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बुक्स का एग्जांपल बताया था, उसमें हमने लिया था 10 बुक्स, फॉर 10 बुक्स कॉस्ट इज 140, फॉर 4 बुक्स कॉस्ट इज 56, एंड फॉर 7 it is 98. This is our x and this is our y. You can take m or n, a or b, any x and y. See, every time x upon y is 40, is 40. 140 upon 10 is 14. 56 upon 4 is also 14, and 98 upon 7 is also 14. That means x upon y is x upon y or y upon x, any x upon y भी कांस्टेंट ही आने वाला है। 10 upon 140 means 1 जा 14 जा 114 आएगा। अगर आप x upon y करते हो तो देन सेकंड था हमारा 56, 4 upon 56, यहाँ पे भी देखो 14 जा 114 ही आएगा, ऐसे ही आने वाला है। x upon y और y upon x, any means x upon y for direct variation is a constant, सेम आता है ना, उसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में कांस्टेंट बोलते हैं, एंड कांस्टेंट is denoted by k, constant is denoted by k. And what is the notation of direct variation? Direct variation notation is like this: x is in the direct variation
y. You can write it also k equal to x equal to ky. See, x equal to ky. It is also, you can write this way or this way. Both are correct. Okay. And for inverse variation, notation is x is inversely proportional to y, means like this. Inversely proportional to y. X is inversely proportional to y. X will k upon y. X will k upon y. यहाँ पे हम इक्वल टू की जगह पे k लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमने एग्जाम्पल लिया था 2 persons are taking 16 days, 8 persons 4 days, 6 persons 5.33 days. Okay, for this every pair your multiplication is same. Multiplication of x and y is same, means x into y equal to constant. X equal to y is constant. See, x into y is k, and you can write also k upon y like this. Understood? These both expressions are very useful for, this is for your practice set 7.1 and this is for 7.2. Okay, now we are going to take some examples.